बैठेंगे तो लगा लो यार इसको जरा। So, good morning, friends. We are in the 7th day of the program. Sit down, please. We are in the 7th day of the program, and we have Professor Mirza Asmar Beg Sahab, Dean Faculty of Social Sciences, my Dean Faculty of Social Sciences. Sir, just to brief, the first and second session were looked after by Professor Girishwar Mishra Sahab. He discussed about paradigm of social research in social sciences and multiple methods how to deal with different problems in social sciences. And the same day, the third session was taken care of by Professor Nizamuddin Khan from Department of Geography. He discussed about how to select the research idea and steps to conduct research. Second day, the first and second sessions were looked after by Professor Akbar Hussain Sahab. He discussed about development and standardization of tests. Same day, the third session was taken care of by Professor Aqil Ahmad Saab, Head of the Department of Statistics and OR, Aligarh Muslim University, Aligarh. He discussed about hypothesis testing and choosing appropriate parametric and non-parametric tests. Third day, session first and second were taken care of by Professor Rajiv Pandey, Head of the Department of Statistics, Lucknow University. He discussed about overview of SPSS and how to enter the data, how to import the data from different databases, and how to compute descriptive and inferential statistics. And the third session of the same day was taken care of by Professor Parvez Talib Sahab, very senior professor of business administration. And he discussed about contemporary practices in social science research. The fourth day, sir, first and sixth sessions were looked after by Professor Ishpal. He is from Shri Vishwakarma Skill University, Gurugram. He traveled since morning and he was with us at 9:30 to start the session. And he discussed with us about the methods of non-linear regression and its application, emphasizing the case study of social sciences. Same day, the next third session was taken care of by Professor Mohammad Shamim from Department of Commerce, and he discussed about sampling and estimation of sample size. Day 5, sir, the morning session was taken care of by Professor Akram Sahab, sociology se, and he discussed about a very interesting topic, measuring social realities, unrolling the tapestry of quantitative research design. Wonderful discussion, sir. And the second and third sessions were taken care of by Professor Muhammad Ghazi Shahnawaz from Jamia Islamia. He discussed about interdependence techniques, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, moderation and mediation. 6 days, sir, the morning session was taken care of by Dr. M. Yusuf Ansari from Department of Petroleum, Aligarh Muslim University, Aligarh. And he discussed about elevating academic writing with analog precision, how to use MS Word. You will surprise that wonderful knowledge he shared. We have been using Word years, but the tips to deal with for the research scholar, wonderful discussion.
And second and third session were taken care of by Professor Naveen Gupta. He is the alumni of IIT Roorkee, and right now he is the director of Hindustan Institute of Management and Computer Studies, Mathura. And amazing motivational speaker. He discussed number of case studies, and the topics were unlocking positive changes, the application through appreciative inquiry. And the next session was action research. You will surprise that कि खेल खेल के दौरान how to conduct the research, how to look after the need of the team building, how to manage the time. एक wonderful discussion था sir सुबह से शाम तक. So my gratitude to all the honorable resource persons. Friends, today morning we have Professor Mirza Asmar Beg Sahab, my Dean, Faculty of Social Sciences. He is the professor in the Department of Political Science at Aligarh Muslim University, Aligarh. And presently Professor Beg is the Dean, Faculty of Social Sciences, heading the 12 Department of Studies. 12 Department of Studies, so you can say the mini university. He has received prestigious scholarships such as Junior Research Fellowship awarded by the UGC and the Fulbright Fellowship granted by the Southern University, USA. He received recognition for his PhD research and was awarded the Best Dissertation Prize by the American Studies Research Center, Hyderabad. His areas of expertise include strategic studies, electoral studies, and Muslim politics in India. Professor Mirza Asmar Beg, his extensive collection of work has been published in prestigious journals such as the Round Table, the Commonwealth Journal of the International Affairs, Economic and Political Weekly, Seminars, Humanities and Social Science Review, Studies in Indian Politics, South Asian Studies, Studies in Islam, Foreign Affairs Reports, Indian Journal of Politics, among others. He has authored a book and edited 3 volumes. Professor Beg has a position on the editorial board of many prestigious international publications. He served as the state coordinator for the surveys carried out by the Center for the Study of Developing Societies. Surveys का नाम आया, so this topic is related to the qualitative research design, and he is going to discuss with how to conduct the survey and how to manage different issues during the survey. His contribution in his areas of expertise have had a significant influence on the whole community. Thank you so much, sir, for accepting our request. And friends, this time to sir, yes, please. Thanks so much. Over to you, sir. Thank you so much. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। सर जब सब मूव करेंगे तो ये नहीं कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, मसला नहीं। हाँ ये good morning, friends. Rather very extensive introduction by my friend Professor Khan. Friends, I decided to talk about something which I do a lot. So I would be sharing more of my experience also as far as doing certain type of research which is survey research is concerned. Because as you would have encountered yourself, when you are doing research as research scholars or PDFs, that there is always a difference between what the theory says and what you experience in the field.
So there is a gap. So I would try to address that so that it becomes easy for you to appreciate the uh, the survey research. Actually, you all know that research, basically, broadly speaking, in social sciences is rather differentiated between the qualitative kind of research and the quantitative research. Why I mentioned this? Because till almost the first quarter of the 20th century, what happened in social sciences generally was that quantitative research was looked down upon. It was suggested that quantitative research is something for people in the natural sciences to do. मतलब ये इनकी चीज़ है, हमसे मतलब we are different. We are people in social sciences, and social sciences deal with quality, with values, with issues which cannot be quantified. So there was a certain a kind of understanding that facts are something which we should not go near because they would dilute the value element of our research. So that would be something which would be not good for us. So it was like a dividing line here, this side of the class. So those people were quantitative researchers in natural sciences, and we are qualitative researchers in social sciences. But because of various reasons, one was primarily the scienticism, the wave of science which blew in the 20th century, where everything was influenced by this scientific approach. And science in research also became something like a fashion. As you have fashion in clothes, you have fashion in academics also. Something is fashionable, it's the thing to do. So we have to be scientific. And the moment you start saying that you have to be scientific, you have to come closer to facts. There were many important reasons, but to my mind, another important reason was that at that time, a lot of people from natural sciences migrated to social sciences, especially in the Western universities, because of the stiff competition in their respective disciplines. Some of them who did not find it, who were not able to sustain in their fields, left their fields and came over to social sciences. Since many of these people had their basic training in quantitative research, so they brought that skill with them. So when they came to social sciences, that was the way they knew how to do research. So they introduced their quantitative techniques into social sciences. So a combination of factors led to the introduction of quantitative research into social sciences. But anyway, we are here. Now what is the state of research today in social sciences generally? A lot of people, you would find a lot of research papers in many leading journals of the world in your whichever field you are in, which would be totally quantitative. Many of us would not be able to even make a sense of that, what is there. That is one extreme. But many scholars in general, would understand that social sciences still remains basically qualitative. But the quantitative techniques lend value to the qualitative research, because social realities are always qualitative. But they have a quantitative element also. And the quantitative techniques can help us to appreciate these things better. So what we need to do is that we need to do our researches as we are doing, but we have to use these techniques as add-ons, as value adders to our researches in social sciences, not be very tempted with them and go totally quantitative, ignoring this. Because you would find a lot of papers here also, where there is only quantitative information and no explanation. So, but that needs to be there because we are dealing with human beings, We are not dealing with machines, we are not dealing with computers, we are not dealing with any other inanimate object. So we need to be qualitative, but that is what helps us to put our research in proper perspective. So that evidence, which you get from the quantitative research is useful. So it should be treated as an add-on, as a useful addition to our research, but it should not be the research. So that is one clarity, which we need to have in mind when we are dealing with quantitative instruments in
social sciences research. Now there are various kinds of quantitative methods, you know all of them. I am basically talking about one method which is which is the survey method. Now this quantitative evidence, you know, which we try to create out of any method, actually corroborates our explanation. मतलब जो explanation हम दे रहे हैं किसी चीज का, उसको corroborate करता है वो evidence. मतलब basically हमें चीज को explain करना है, उसको as an evidence use करना है. जैसे for example, when a good attorney is arguing his case in the court of law, so he would not only or she would not only come up with some evidence, you know, this is the evidence and this is the gun and this is the fingerprint, fine. So, Judge Sahab, you give a judgment in my favor. No, she would build a case, you know. The arguments will be there and eventually to clinch the argument, finally, the attorney or the rather pleader would come up with that evidence, quantitative evidence, that all these evidence is there and this is the quantitative evidence which seals my case that this is the person who committed the murder or whatever. So the point basically here is that I have my arguments, I have my explanations, and this is something which comes as an additional argument, and since it is quantitative, it cannot be denied. But it has to be preceded by all kinds of arguments. It cannot be the only thing. Are you getting my point? What I am trying to emphasize, that it is not the research, it is something which is adding on to the research. So we can't escape this, you know. If somebody is thinking that you can escape your explanations, your arguments, the explanations you build up and the arguments you create and replace it with the quantitative thing, that is not what we are aiming at, you know, what we should not be aiming at in social science research. So therefore, you know, this research is something which is extremely important. And when we are talking about survey research, as you all know, it is one of the methods through which we try to get facts, you know, quantitative information. There are certain things in which survey becomes very, very important. For example, you know, I'll give you example about my own experience with survey research. I do a lot of work with election studies. Nowadays, we had elections and you would have surveys whenever elections are held. तो उसको भी ज़रा मैं explain करता हूँ कि how to read those surveys. Now, whenever elections are held, you see a lot of surveys on the television, in the newspapers, and all kinds of polls and exit polls, and many of them are way off the mark eventually. And then they all talk about how they did it and how many people they interviewed, and all kinds of things are said about those surveys. And you are quite often, you know, confused as to what you should derive or how you should make sense of those surveys, you know. तो कभी कह दे रहा है, कभी सही हो जा रही है, कभी गलत बात हो जा रही है. तो मतलब what is that, you know? Although they claim to be a scientific, you know, process through which they are trying to get that information. So why many a time that information or the facts which they come up with are not correct, you know, they are off the mark. Why it happens? One is, the most important thing is that methodologically those surveys are not correct. So one, survey is very useful, survey is very important, but survey should be done according to a universally recognized survey research procedure. Because in research, in fact, whatever you do in research, the most important thing is the procedure. Nothing else is important. You follow a procedure, wherever it leads you, you have to go there. You don't have to use your common sense otherwise. Common sense is to follow the route which is prescribed by the procedure. And the importance is of the procedure, not of the result. Quite often we think, अक्सर हम लोग भी बात करते हैं, आपने रिसर्च करी, क्या मिला? उनका कुछ नहीं मिला, तो बेकार रिसर्च है.
आपके रिसर्च में ये मिला, हाँ बहुत अच्छी रिसर्च. But our research is not like a research in a laboratory where you are trying to search for a drug for a disease that he couldn't find a drug and she found it, so her research is good and yours is useless. There somebody might say like that. But in social sciences research, that is not the way you judge a research. If you did not find anything, your research is equally valuable as compared to someone who found something. The important thing is not to find something, the important thing is to follow the procedure. So internationally also, whenever you do any research, internationally का मेरा मतलब है at a certain standard, whenever you do any research, what is seen in your research is the procedure which you follow. And the procedure should be standard procedure or a standardized procedure. A standardized procedure is the universally accepted procedure. It is exactly like when you go for a blood test. A doctor prescribes you a blood test and a laboratory in your locality is saying that I'll do all your tests in 500 rupees. But somebody who is a reputed pathology lab like Lal's, they'll say that I'll charge 2,500. So common sense says that everybody should go to that lab which is charging 500 rupees. Many people go there who don't know. But if you know things, you'll go to this lab and your doctor will also tell you, if he's a good doctor, that you go to this lab. Why to spend 2,000 rupees more? Because these people follow that procedure to come to a result. Maybe the results could be the same. Eventually कोई कहेगा साहब आपके में भी वही आया, इनके में वही आया, तो 2,000 रुपये आपने वेस्ट कर दिया. Issue उसका नहीं है. Issue ये है कि they follow a certain procedure which is universally accepted and therefore the doctor would say that this is a reliable result. Maybe you also got there. Sometimes you could be right, but many a time you could even be wrong. Nobody can know that whether in this case you are right or wrong. So doctor is not going to take a risk here. Same is true of the surveys which you read in newspapers. Sometimes they hit the head of the nail, right? You'll say, oh, very good survey of Falana agency. Other times they'll say they are very much off the mark. So why it is happening? Because most of them are not following the procedure which they should follow in a survey research. Now what is the procedure in a survey research? The first, of course, is the survey framework or the survey design. What you have to, what is your plan? Survey design is exactly like the design which an architect makes of a house which you are supposed to build. When you go to a good architect, the architect will plan everything, up to the minutest detail. It will be on paper. Now the task of the masons and the carpenters and the others is just to translate it in reality. So what the architect has done and what he is charging for is he is able to visualize everything, what is actually going to happen. And the better the architect, the better the design. So a good architect is one who knows everything, what is actually going to happen, what are going to be the problems, what are going to be the obstacles, what are going to be the costs, and he would plan each and everything, and exactly the same thing will happen when you go to actualize that design in practice. From the cost to the bricks to the mortar to everything, everything would be exactly planned, and that is what is his merit. Otherwise, if I and you start doing it, of course the problems which come. So that has to be very perfectly done. We'll come to that. And then we have to see that how we are going to execute our plan with reference to the resources which we have got. Sometimes it happens that I, being an enthusiastic researcher, and my supervisor also being equally enthusiastic, we decide upon doing an India-wide research, pan-India research, maybe a pan-state research. UP state agar ho to wo पूरी मुल्क के बराबर है. It's the 6th largest country in the world if it were. So we plan a huge research, but we don't have the resources in terms of manpower, in terms of time, in terms of money, in terms of anything, and then we plan that. So that is a wrong plan, मतलब जितने पैसे मेरे पास मकान बनाने के लिए उतने ही का तो नक्शा बनवाना है ना इनसे. ये थोड़ी कि ताजमहल का नक्शा बना दीजिए. तो he'll make a ताजमहल design, but I don't have the resources, so I'll not be able to execute it. It's useless. So therefore, the most important thing is to plan according to the resources. And therefore,
And that is a mistake which we quite often commit, that when we are deciding upon the topic of a research or any research we want to do, we are quite often very ambitious. And we are not thinking about our resource, our capability, our time or resources which we have. Usually if it is an individual person, you can't even do a research maybe in 2 districts sometimes, if it is very micro level research, because you don't have the wherewithal to do it. So the point is that you need to plan it according to your resources. And then you have to decide that what would be the representative sample of the universe which you are studying. Universe is what you are studying. For example, we do election studies in the whole country. So election study of India, huge country, of course. So when we are thinking of doing a survey pan-India, we know the resources which we have. Or if we don't have, we can't do that. Because if you are doing a research pan-India, you have to have a relatively bigger sample. If it is a small universe, usually you can even have 10% or 20% of that universe as the sample. यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं तो 10% और 20% जो टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन है उसका आप सैंपल ले सकते हैं. लेकिन इंडिया के लेवल पर आप कितने भी परसेंट कम लेंगे वो तो it will run into crores, or lakhs sometimes, which you cannot do. So you have to come down to a point where it is reasonable, but it is not too small, that it is not representative, and it has to be selected in a manner that it represents all the shades which are there in the Indian population, in terms of regional diversity, in terms of religious diversity, in terms of caste diversity, in terms of class diversity, in terms of linguistic diversity, and all kinds of diversities. They all should be taken care of in a universe, which is so large. Otherwise, your sample is going to be non-representative. So representativeness of the sample is more important, not the size of the sample. अब अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम साइज पे जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने गौर किया हो, all these surveys on TV, on newspapers which come, they'll tell you we interviewed 5 lakh people, 2 lakh people or whatever, very high numbers. And by emphasizing on the numbers, they are trying to convince the reader or the viewer of the TV program that our survey is very authentic. Because these people talk to only 50,000 people and we talk to 1.25 lakh people. So therefore we are better. No. That is no guarantee of a survey being better, because the selection of that sample is not done scientifically. So the sample size should be reasonable, but that size should also conform with a scientific technique on the basis of which you decide who are the people who are going to be part of that sample. Are you getting my point? For example, some agency hires some people, because most of these news agencies which do these surveys, they hire private agencies who are there in the market to do surveys. Now these private people have to do the job as early as possible. They are not concerned with what is the result and what you are going to benefit out of it, whether it is right or wrong. They'll just hire young boys and girls and ask them to stand on a traffic intersection in Delhi and stop people and 2-3 सवाल बताइए, बीजेपी कांग्रेस फलाना किसको वोट देंगे, क्या क्या धड़ा शाम तक 2000 इंटरव्यू हो गए, 10 दिन में 10,000 हो गए, and so on. So they'll do the numbers and give it to you. Now of course that is something whereby you are getting the opinion of the people. But at the very first go, somebody can tell you that this has a very strong bias because they are interviewing people only who have cars or two-wheelers. How many people in India have cars and two-wheelers? Majority of the population does not even have these things. तो क्या हुआ, आपने 90% हिंदुस्तान के लोग तो वैसे ही बाहर निकाल दिए कि सुबह ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे खड़े हैं और आप लोग ऑफिस गोअर से इंटरव्यू कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि ये सारे लोग मोस्टली होंगे जो किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे, उसमें फिर प्रिडोमिनेंटली मेल्स होंगे, तो फीमेल पॉपुलेशन भी काफ़ी हद तक इग्नोर हो गई. और फिर घूम फिर के आपको पता लगेगा कि वो जो यूनिवर्स है आपका वो बहुत सिकुड़ गया. सैंपल तो बहुत बड़ा है लेकिन वो कंसेंट्रेटेड यहीं है. तो क्या हुआ कि आपका सैंपल जो है वो इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव.
because sample is representative. It should be representative. जो सैंपल है वो है ना कि कुछ लोगों का इंटरव्यू लेके हम सबके बारे में बात कर रहे हैं. अलीगढ़ शहर में हमने 2000 लोगों से बात की, उसके बेस पे ये बताया कि अलीगढ़ के लोग ये कह रहे हैं, वेदर इलेक्शन और नो इलेक्शन, वी आर ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पीपल इन अलीगढ़ सिटी ऑन एनी इशू. So if 2,000 people are to be interviewed in Aligarh city, those people should be truly representative of all kinds of intersectional variation which is there in the population of Aligarh. Only then you can say with some degree of confidence that this is something which people in Aligarh are thinking about. Otherwise it will be totally wrong. So the basic reason why these surveys are very much out of sync, because they do not take this factor into account. It's not that they don't know it, but they have their own limitations. Now many of them are getting more careful that we have to be representative, but still they have to hire people from the market. And you know how reliable people from the market are, because they will be doing things in their own way. Because you have to eventually send people to take interviews, so how you do it, but we'll come to that. But the first thing is that they would not be able to take all these factors into account to make their sample totally representative. And therefore, what happens that when these market surveys come in, they are mostly out of sync with reality, or they are off the mark. Sometimes they might be on target because they don't follow the protocol, the procedure which a survey research ought to follow. वो उस तरह से सैंपल को नहीं निकाल पाते या नहीं निकालते, और सही लोगों से इंटरव्यू नहीं लेते, और फिर इंटरव्यू भी कैसे लेते हैं वो अलग एक इशू है. विल कम टू दैट. So the point is that one very important thing at the first step is that the sampling should be done in a very proper manner. Because if sampling is not done properly, then you are not able to get the right kind of people for your interviews, whom you are going to interview or from whom you are going to cull the information about the research questions which you have framed. What we basically do is that, for example, as I mentioned, I do some research on voting behavior of people in the state of UP. So, for example, I have to try to understand how the Muslim voters voted in the assembly elections of 2017. So one is that I need to get information about their voting behavior, and next I also need to get the information about some previous election, for example, or some future election, say अब तो हम 2023 में आ गए, that how did the Muslim voters vote during the 2019 Lok Sabha election. So in survey research, what we do basically is that we try to create some comparative framework also, to put this information in a perspective. So when I get the information about a particular kind of voters, as I mentioned in 2017, and then I get the information about 2019, and then I would compare. Has there been any shift, or it is same, or it is going up, or it is going down, wherever it is going. So what this will do, this will give a quantitative information about an explanation which I am already giving. Because I am trying to analyze the caste factor, the religious factor, the gender factor, the regional factor, urban and rural, so many other factors, because of which I think that voters of a particular community went this side or that side, or they stayed in the middle or whatever in this election. So I'll try to compare this data with the data of the previous election or some future election, and then I'll give my explanations why this happened. So what is the limitation of this quantitative research? The limitation is that it will just give me information that this percentage of Muslims voted for this particular political party in this election, and in this election their votes spread in this manner. It is just giving me an information. The reasons I have to give through a qualitative explanation. I need a qualitative explanation to give, because otherwise data can be very dangerous. Are you getting my point? It is exactly like when you do a blood test. आप सबको ने experience किया होगा या घर में किसी का हुआ होगा. So when you read that report, many of the factors are off the mark and you get alarmed.
When you show it to a doctor, he says, नहीं नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं. आपको लगा अरे ऐसे कैसे डॉक्टर साहब, ये देखिए, नहीं नहीं वो उसको होलिस्टिकली देखा जाता है, वो ऐसी बात नहीं है, और ये सब चीज़ें इधर उधर हैं, लेकिन इट्स फाइन. Or he'd say that maybe it's something is not fine and he'll give him medicine, but he will not be alarmed as you are, because I'm a lay person. So I'm unnecessarily alarmed. So that test, which should have given me some peace, has created some tension in my mind because I am not able to read it. So quantitative data is very dangerous also, unless you understand what lies behind it. So only data can create a consternation in your mind, as it did with a blood report which I saw of myself. But if I know the things, I'll be able to make sense. So that's why I said that that kind of explanation is very important, or that understanding is very, very important, whereby you would knit your data in the right place. You have a narrative, and in that narrative, that data comes in. तो डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है? डेटा जो है वो एक जगह एक रुकी हुई चीज. एग्जैक्टली मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉरी, जैसे किसी आपकी फैमिली में किसी बड़े करीब रिलेटिव की किसी की शादी थी, एंड यू कुड नॉट अटेंड दैट मैरिज. Somebody else, you know, in your family attended it, and he or she brought lot of pictures of different events. So you are seeing the pictures, and she is telling you the marriage ceremony, and looking at the pictures, you are trying to make sense. You are trying to make those pictures talk. They are not talking, they are still photographs. लेकिन आप, you are making sense. तो इनकी कमेंट्री और वो पिक्चर मिला के ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, कैसे हुआ होगा, क्या क्या चीज़ें कैसे हुई होंगी. मैं नहीं जा सका, लेकिन आई एम सीइंग इट, यू नो, ये अच्छा, ये बढ़िया है. तो क्या हुआ, वो पिक्चर समझ लीजिए एक तरह से क्वांटिटेटिव डेटा है, लेकिन उस पिक्चर के साथ जो कमेंट्री हमारी बहन ने या हमारी सिस्टर ने या किसी रिश्तेदार ने दी, वो दैट tells you the whole story. So it's exactly like this. When you write a research paper or a thesis, this quantitative data की importance वही है जो उस पिक्चर की उस नरेशन में है. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम नहीं. जैसा मैंने कहा, यस नो में आंसर देता है. अच्छा, उसके बाद कुछ और बताता हूं. अच्छा, बहुत से फैक्ट्स हमें पता होते हैं, पता इन द सेंस कि हमें विद एक्सपीरियंस लगता है कि दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाई पीपल वोट फॉर दिस पार्टी. आपसे पूछे कोई आदमी कि क्यों आप कह रहे हैं, सब लोग यही कहते हैं, सब लोग कुछ कह रहे हैं, तब भी वो गलत हो सकती है बात. और एक आदमी कोई बात कह रहा है, वो भी सच हो सकती है, होता है नहीं. लेकिन हम ये कहते हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं इसलिए ऐसा है. किसी से आप बहस कीजिएगा, खासतौर से पॉलिटिक्स पे, तो एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स. नहीं नहीं, पीपल वोटेड फॉर दिस पार्टी बिकॉज ऑफ दिस, आई नो दिस, दिस इज अ फैक्ट. फाइन, यू आर सेइंग दिस इज अ फैक्ट, बट हाउ दैट फैक्ट इज टू बी वेरीफाइड. सो सर्वे रिसर्च विल हेल्प यू टू वेरीफाई दैट फैक्ट. मतलब जैसे मेरा पेपर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे साहब इसमें तो वही बात लिखी है जो हम सब जानते हैं, क्या परेशानी की बात. नहीं नहीं, आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैंने उस बात को क्वांटिफाई किया है वहां पे. वैसे ही जैसे मेरी शक्कर बढ़ी हुई है, तो ये कहें साहब 2000 रुपये खर्च करके भी तो इन्होंने यही बता दिया कि शक्कर बढ़ी है, तो पैथोलॉजी को 2000 रुपये देने से क्या फायदा. 2000 रुपये देने से ये फायदा हुआ कि मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने उसको क्वांटिफाई कर दिया. व्हाट इज द स्टेट ऑफ माई डायबिटीज, whether it's too high or low or wherever it is, and on the basis of that a good doctor will tell me whether to reduce the medicine or increase it or keep it the same or whatever. So you need to have that verification, which is very important. So many things we all know, we all understand, but we could sometimes be wrong also. And even if we know, you know, it is not verified. It is just common sense or common perception. But that common sense and common perception cannot be used in a research as evidence. When you want an evidence, it has to be quantitative, and that evidence has to be arrived at, as in this pathology lab, through a procedure which is universally recognized. So one survey research is also saying that this is the data, and you are also saying the data, but your data is, I'll say your data is right, because your data has been arrived at through a certain procedure. So you have to tell the procedure. जैसे आपने देखा होगा जो अच्छी पैथोलॉजी है उसकी रिपोर्ट पे लिखा होगा कि किस प्रोसीजर से उसने ये रिजल्ट हासिल किया है, वो प्रोसीजर लिखा होगा. उसी तरह सोशल साइंस रिसर्च में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल द प्रोसीजर,
how your survey was done. It's not only this survey and this number of people as these TV and newspapers would tell you, but they need to tell you what is the procedure, how you reached so many people, how you did it. It is very important. But because they did not follow that protocol, they would not divulge that procedure. And they know that people are naive enough, they would not go on that. They would just be convinced with the numbers we are talking about. This is the number of people we talked. And that's the reason, why most of the times they are off the mark. So as I mentioned that these surveys are not reliable and there are issues of sample size, there are issues of rather field work also. अच्छा, the other important thing is जो चीज़ें ज़्यादा emphasize नहीं होती क्योंकि हमको लगता है कि साहब जैसे आप रिसर्च भी कर रहे होते हैं साहब आपको सुपरवाइजर ने कह दिया कि you need to do a field work and you need to have a survey, so they give you a questionnaire, you go and distribute the questionnaire and you do it and it's considered to be very simple, I did it, fine. No. Two things are very important. One, how the questionnaire is framed. And the next thing is how the questionnaire is administered in survey research. These two things are of extremely critical importance. What usually we see in the universities also, a lot of those questionnaires are copied from standard books, which students come to us also sometimes that this is a questionnaire and we need your response from that. How can you copy a questionnaire from somewhere and administer it in relation to my problem? This problem is unique, So you need to create a questionnaire exactly related to that problem, And the questionnaire is to come out of your research questions. What are the questions you are asking? Because the questionnaire has to be so framed that it is able to encapsulate the spirit of the questions which you want to ask. And actually what is social science research? It is just asking questions and answering questions. कुछ और नहीं research. रिसर्च में अक्सर कुछ लोग हमारे कलीग्स भी आप लोगों के साथ भी होगा कोई आपसे मिलता है आप रिसर्च कर रही हैं कौन सा साल है 3rd year है हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू रिटन दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग क्वेश्चन शी हैज नॉट रिटन एनी चैप्टर्स शी डज नॉट नीड टू राइट एनी चैप्टर्स इवन इफ शी हैज 4 years have passed. Why? Because what are these chapters? Chapters are your report. Like a police officer who is investigating a criminal case, and midway the case, you ask your friend police officer, how many pages of report have you written? He'll say, have you gone mad? I am investigating the case. I will write the report after I have finished my investigation. The doctor also writes the report after he or she has finished the investigation. How can you start writing the report midway? Why? Because most of our researchers are like making notes when you do in your MA class. इतने notes बन गए, खत्म हो गए, research हो गया. The report has to be written at the very end. It cannot be you can't start writing it in the middle, It is to be written at the end. तो अभी तो आप कर रहे हैं ना उसको. तो पहला काम अच्छा और उसमें करना क्या आपको पूरी रिसर्च में 2 ही काम करने. Ask questions yourself, to yourself and answer questions. But it is very difficult to ask penetrative questions. Not like students ask in our class, sir एक बार और ये चीज बता दीजिए. ये question नहीं है. That means you have not understood what I am talking about. Question has to come from within. Question is a probing question, a question which a good attorney asks the accused in a court of law. Do you think Ram Jetmalani is going to ask you, how are you, from where you bought your jacket? What is your mother's name? What is your father's name? No, he'll ask just two questions and you will be nailed. Because the questions will be so penetrative that they'll take you to the point where he wants you to go. You are trying to avoid it, but you can't avoid because my questions are so penetrative. How can I ask those questions? Because I know that issue inside out. मैं सारी बातें समझता हूँ. जैसे those of you who are staying here, मतलब it's besides the point, those of you who are staying here, and maybe it's winters, and the electricity supply, assume, is erratic in Aligarh. The first question, if I am the director here, I'll ask you the first question, how was the water in the morning? To check by people here whether they were vigilant enough to ensure that hot water supply was there in the room so that the kids here could take a good bath in the morning.
But are you getting my point? So I know what are the two questions to be asked because I understand this place. Somebody coming from outside, howsoever intelligent, will not be able to ask those questions. So the point basically is that I need to understand the issue inside out. So I will ask those questions. Those questions have to be so penetrative that they go inside the issue. And then I start answering the questions truthfully. My research is over. These are the two things I'll do. So when I am going to administer a questionnaire on this rather population, I need to know what questions to ask. Otherwise, it will be a sheer waste of time. For example, in my election studies, I do election studies, and I go and straight away ask you, as these surveys would ask you, which party you voted, whether you like this leader or not. 2-3 straightforward questions. You think people are so naive that they'll tell you what they have done and which party they have voted. मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब it's so easy. If you go in a village, you understand, how the villages are, and she is a person from a dominant community, and he is a poor person, and he has probably voted for a party which she doesn't like. Can he tell in front of her that I voted for that party? He will never tell. He can't tell. So most of the people who are 80% of India lives in villages. So that means 80% of the people, even if you reach them, will not be able to give you the right answer. So you are naive enough to ask that answer that question to a lady there, and then in a patriarchal society, in front of the father or the husband, you are asking me which party I voted. Maybe I voted some other party, but I can't say in their presence. So you should know this. You should know the Indian society, the Indian patriarchy, the Indian caste system, the Indian setup of villages, and all the other things to be able to ask questions in such an intelligent manner that you will be able to get the answers which you want, and the questions are so clever that the person is not able to sense exactly what you're asking. So what exactly happens here is that जैसे होता है कि हमने आपसे पूछा कि which party you have voted. That will be one question, but that will not be the only question about your vote preference. Out of 50 questions, I'll have 2-3 questions placed at different places which will be related to this. Who is your favorite leader? For the last 10 years, which leader you admire? How has development taken place in your village? So eventually we will link all these questions to know whether that answer was right or not. So it's not so simple that I frame 10 questions and just on a piece of paper and go make a questionnaire and go administer it as we usually do. So the point basically is that this questionnaire is something which takes maybe months to frame, because the questions have to be discussed, each and every question, their placement, their language has to be very carefully drafted, because you are going to administer it to a general population. अच्छा आप शहर में रहते हैं, for example, there are certain words which we are very familiar with. You are going to a village and you ask that person, कौन सा politician बड़ा smart लगता है आपको, for example. एक तो शहर वाले भी smart का मतलब नहीं समझते, लेकिन गांव वाला क्या खाक समझेगा बेचारा आदमी, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है. तो आपकी क्वेश्चनार की जबान वो होनी चाहिए जो हिंदुस्तान के सड़क पर या गांव में खेत में जो लास्ट आदमी है उसके हर वर्ड को समझ रहा हो. तो ये बहुत सोच समझ के करना है ना, बिकॉज आदमी तो अपनी सोच के हिसाब से हम तो ये जानते हैं, सब लिख दो. दिस इज हाउ इट इज. व्हाट इज द पॉलिटिकल विंड विच इज ब्लोइंग अकॉर्डिंग. अरे भाई ये आपकी बात होगी लेकिन वहां नहीं है. तो पहली चीज ये है कि क्वेश्चंस हैव टू बी वेरी केयरफुली ड्राफ्टेड, देयर लैंग्वेज हैज टू बी वेरी वेरी simplest possible, and they should be so nicely worded that they don't offend anyone also. Sometimes we are inadvertently offensive. Inadvertently का मतलब यहाँ ये है कि मतलब unintentionally, मतलब I am not intentionally doing it, but I am asking a question which offends you. So I have to be sensitive enough to understand that this question is to be asked to all kinds of people, in all kinds of settings, so it has to be very carefully drafted in a very nice way, so that when I go and administer this questionnaire, I am able to get the response which I want. ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चनायर आप किस तरह से फ्रेम करते हैं और उसको उसके अंदर क्या लैंग्वेज होती है, किस तरीके से उसको आप स्ट्रक्चर करते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, प्री टेस्टिंग करते हैं और फिर उसको फाइनलाइज करते हैं इन डिस्कशन विद द सुपरवाइजर और योर टीम, एंड देन यू फाइनलाइज दैट दिस इज द क्वेश्चनायर विच यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर.
Now, the other important thing is that we all think that anybody can go and administer means to ask questions. Anybody can go and do it. इसमें रखा क्या है? क्वेश्चन पूछना है, जाके पूछ लेंगे. तुम जाओ भाई, तुम भी चले जाओ और इनके साथ इनको भी ले लो. 2-3 दोस्त 5 चले गए, हो गए. It is again a very technical thing, because asking questions again is a very, very sensitive point here. You might have encountered yourself, in your own homes, from wherever you are coming. Quite often, a lot of people come knocking on your doors in the afternoon कि साहब कुछ खरीद लेंगे? नहीं, हमें नहीं खरीद. मतलब आप, you just show that person off. You are not even ready to listen. वो आदमी बड़ा कह रहा है, साहब सोच लीजिए, बड़ा अच्छा सामान बेच. नहीं, कुछ नहीं, टाइम नहीं. Why? Because nobody is interested in giving time to anyone. And that too when you are not going to gain anything. Imagine somebody knocking your door at 2 in the afternoon and asking you that I want some time for a questionnaire to be asked. What will you do? Most of the times you'll say no. So what happens in Western countries like America? They do election study of the whole country. They just interview 1,000 people. And that too they pay people for the interview, because nobody gives time there in America for free, even to their own kids. तो वहाँ तो फ्री में तो कोई काम ही नहीं होना है. इंडिया में फिर भी ऐसा है कि हमको पैसे नहीं देने होते. लोग फिर भी बहुत शरीफ हैं, अपना टाइम दे देते हैं. लेकिन ऐसे कोई आदमी सड़क चलते आपको टाइम नहीं दे देगा. आपको टाइम लेना आना चाहिए. उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए. उसकी भी ट्रेनिंग होती है. जो प्राइवेट एजेंसीज कोई सवाल ही नहीं कि कर पाएँ उसको. हम लोग जब सर्वेज करते हैं, जो एकेडमिक सर्वेज होते हैं, बिकॉज इन आर सर्वेज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्वॉल्व, सो देयर इज एन एजुकेशनल पार्ट ऑल्सो इन्वॉल्व. सो वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स and they are interested in getting trained because they want to learn. Here money is not the issue. And when the student is going, he knows that, or she knows that, sir has sent me, so I have to be truthful. ऐसा नहीं कि I'll sit in my room and fill the questionnaires, which private agents would definitely do. Who would take the trouble to go to a village and search for one lady in some obscure house and get her interview? It's very difficult. It's very cumbersome. But here, because of academic worth, we understand that this is what we need to do, so we take the pains, means students and teachers. Anyway, so when the person is going to take that interview, it is very essential to understand that how you have to approach that person. उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी कर लेगा उसको. Because when you approach a person, I said the first instant reply will be that I don't have time. So you have to be very polite. You have to be very courteous. You have to go and tell that person that I am a student. Acha, you have to play with the sentiments of the people also, because in the Indian society people are nice, especially to students, that sir, I have come from a university, I am a student in AMU or BHU or Jamia, and I am doing some work and my teacher has sent me here. Or sir, if you can give me 10 minutes of a time, it will be very kind of you, it will help me in my studies. मतलब ये सब उर्दू में, हिंदी में बोलना है, अंग्रेजी गाँव में नहीं बोलेंगे आप. और बड़े प्यार से उनको लगेगा कोई बच्ची आई है, बच्चा आया है बेचारा सीधा साधा पढ़ने लिखने वाला, चलो भाई इसको टाइम दे दो. हमारे लोग इतने कंसिडरेट होते हैं और हमेशा दे देते हैं टाइम. लेकिन उसके लिए आपको उससे बहुत पोलाइटली, बड़े अच्छे से उसको अप्रोच करना, वो भी एक टेक्निक है. ऐसे नहीं है कि आप नॉक किया कि साहब मैं क्वेश्चन पूछना है. अच्छा, फिर एक इंसान आपसे मिला, वो कहीं जा रहा है, उसने हो सकता है कह दिया कि मुझे खेत पे जाना है, आई डोंट हैव टाइम. तो आप कहें ठीक है साहब, थैंक यू. नहीं, इट्स योर वर्क. तो यू कैन आस्क दैट पर्सन कि आप कब लौट के आएंगे, कब आप खाली हैं. कहें तो आपके साथ में आपके खेत पे चलो, आप काम करते रहेंगे, मैं सवाल पूछ लूँगा. या कोई कब आप लौट के आते हैं. मतलब आपको उस इंसान को पूरा लिवरेज देना है, क्योंकि आपका काम है. आप उसको कोई लॉटरी का टिकट बेचने नहीं आए. तो उसके लिए आपको ये तरीका आना चाहिए. आपको अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप उस आदमी से, उस इंसान से एक रैपो स्ट्राइक करें. फिर इंडिया की जैसी सोसाइटी है, आप किसी यहाँ गए साहब कि मेरे पास जो है वो आपकी बीवी का इंटरव्यू लेना है. शहर में भी आप जाएं, आपकी बहन का इंटरव्यू लेना होगा. बहन का क्यों लेना है, मेरा क्यों नहीं लेना? क्या खास बात है भाई आप मेरी बहन से क्यों बात करेंगे, या मेरी बीवी से क्यों बात करेंगे, या इवन मेरी माँ से क्यों बात करेंगे? भाई मुझसे करिए. अच्छा, प्लस ये कि पॉलिटिक्स के मामले में हिंदुस्तान में हर आदमी को लगता है कि उन्हें क्या पता है, मुझे तो सब पता है. आप मतलब मुझसे पूछिए, मुझे सब मालूम है मुझे. तो वो आदमी समझ रहा है कि मालूम होने का इशू है. तो अब आपको उसको कन्विंस करना है कि सर ऐसा है कि आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन हमारे सर ने एक तरीका बताया है कि रिसर्च जो है उसमें कुछ लोगों के नाम निकलते हैं. कोई लॉटरी निकली है दिल्ली में, अलीगढ़ में, या वहाँ, उसमें वो नाम आया है. तो ऐसा है कि हमको बात करनी है आपकी वाइफ से. अगर आपकी वाइफ आ जाए यहाँ आपके सामने तो हमसे कुछ सवाल पूछ लें.
अगर वो नहीं आ सकती तो अंदर होंगी, आप यहाँ बैठे हैं आपके सामने। मतलब ये सारी चीज़ आपको सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है कि कैसे हिंदुस्तानी सोसाइटी में किसी घर की किसी लेडी का आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं और वो आदमी तैयार हो, तो आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना है ना। वो आदमी बैठ जाएगा, उसके सामने उससे बात करना, बीच में वो बोलेगा बार बार, तो आपको उसके ना भाई साहब प्लीज़ आप मत बताइए, उनसे मुझे बात करनी, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर आदमी के अंदर इतने आर्गूमेंट्स हैं और इतना ज्ञान है कि वो सोचेगा कि इनको छोड़ो मैं बता देता हूँ। तो आपको उसी इंसान का लेना है। क्यों? क्योंकि आपको उसको कन्विंस करना है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस होल प्रोसीजर इज़ वेरी ट्रिकी, you need a lot of training for that, you need a lot of patience for that, you need a lot of interpersonal skills for that. You learn all these things. Students, when they go, they learn a lot of things because they have never gone to do anything in their lives like this on their own. But it is very important because otherwise you will not be able to get that interview. तो आपको ये पता होना चाहिए। खासतौर से आप गए किसी गांव की सेटिंग में, तो आप वहाँ पे ऐसा होता है कि हमेशा 4-5 लोग आपको घेर के बैठ जाएंगे, बहुत लोग फ्री हैं, अब बोलो। अब वो आदमी जैसे पुलिस आई हो किसी घर, 4 आदमी घेरे हुए, अब उसको सोच के जवाब देना है, सारे जवाब की पांचों खुश रहें। एक साहब यादव जी हैं, एक ठाकुर साहब हैं, एक पंडित जी हैं, एक दलित हैं हमारी तरह, कुछ और है। अब आप समझ रहे हैं गाँव की कास्ट की इक्वेशन में क्या बोलेगा बेचारा आदमी। तो आपको बड़े प्यार से उन लोगों को कन्विंस करना है। अच्छा, उसमें से 2-3 लोग हैं जो आपको उसके घर तलाश करने में मदद भी कर चुके हैं, तो उनको भगा भी नहीं सकते आप। तो आपको बड़े समझदारी से वहाँ काम लेना है कि भाई ऐसा है, देखिए कि ये इंटरव्यू जो है उसको ज़रा अलग से लिया जाता है और आप हमारे साथ आएँ, आप लोग यहाँ बैठिए, ज़रा चाय पीजिए, मैं ज़रा इनको अलग ले जाके उधर थोड़ा कुछ इनसे बात करना चाहता हूँ। मतलब बहुत ही डेफ्टली आपको उस इंसान को क्राउड से भी अलग करना है, फिर उससे सवाल पूछना है। ये सारी चीज़ों में वक्त लगता है, स्किल लगती है, टाइम लगती है, जो किसी प्राइवेट प्लेयर के पास टाइम नहीं होगा, आपके पास है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट उसको सीखना चाह रहे हैं। तो ये काम आप करेंगे जब ये हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आप उस इंसान से पूछेंगे, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे अच्छा सवाल दे जाओ, कल सुबह ले लेना। हम लोग खुद करते हैं, रख जाओ कल दे लेना। क्वेश्चनार ऐसे एडमिनिस्टर नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चनार को एडमिनिस्टर करने का तरीका है। किसी को क्वेश्चनार आप देते नहीं है, क्वेश्चनार आपके पास होगा, आप उसको पढ़ेंगे, वो जवाब देगा या देगी, उसको लिखना है उसे। तो दैट इज अ प्रोसीजर यू नो which has to be followed. That is how questions are administered. तो अगर आप कोई दूसरा तरीका करेंगे जो शॉर्टकट है, एक दिन में 20 लोगों को बांट दिया, शाम में ले लिया, इससे आसान क्या है, वो भर ही देगा। लेकिन ये नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि उससे वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद से पढ़ेगा, अगर वो पढ़ पाता है या अगर नहीं पढ़ पाया किसी पढ़ाएगा, तो उसको वो क्वेश्चन किस तरह पढ़ के सुनाया जाएगा, वो आदमी क्या करेगा, क्या उससे समझेगा, वो इक्वल नहीं होगा। बिकॉज the same thing, the same medicine has to be administered to all these people to know the result. So when I administer it, I know how I am administering it to everyone. If I give it to you, it is diluted. So you have to read that question to those persons exactly as they have been written in the questionnaire, without changing any words and without explaining anything. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चनायर के अंदर आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। इसका मतलब तो यही है। क्यों? क्योंकि वो इंसान उस लफ्ज़ का जो मतलब समझ रहा है उसको समझने दीजिए, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ये सारे वर्ड्स डिफरेंट सोर्सेज से उसके पास, उसके दिमाग में आ रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपको भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको वो क्वेश्चनायर पढ़ना है और वो इंसान उस क्वेश्चनायर का जो भी रिस्पॉन्स देगा उसको आपको धीरे से नोट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चनायर में बड़ी ये प्रॉब्लम आती है अक्सर। जैसे किसी से पूछा कि साहब आपके समझ से भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए, सवाल होता है हमारे अक्सर। तो आप सब जानते हैं कि कुछ ये लोग हैं प्रोबेबल, और उसने हो सकता है उसने कह दिया, उसके गांव के कोई प्रधान है रविंद्र पाल जी, कि साहब मेरी समझ से तो रविंद्र पाल जी को होना चाहिए। तो आप क्या बेवकूफ़ आदमी है, वो कैसे बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? मतलब वो गांव के तुम्हारे प्रधान हैं और वो थोड़ी हैं, वो मेन कैंडिडेट तो ये हैं, इनमें से कोई बनेगा नहीं। जो उसने कहा है वो आपको लिखना है। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो जो भी मैं रिस्पॉन्स दूंगा वो लिखना है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? हम हर चीज़ को प्रॉपर करते हैं ना, जैसे रिसर्च में ही करते हैं। जो एविडेंस हमारे मतलब का नहीं उसको छोड़ दिया, क्योंकि हम तो ये प्रूफ करना चाहते हैं ये बात, तो उसका उल्टा एविडेंस है उसको हटा दिया। जैसे वकील करता है कि वकील अपने क्लाइंट के सारे एविडेंसेस फेवर के वो रखता है, बाकी को हटा देता है, इसको दबा दो। रिसर्चर को ये काम नहीं करना है। ऑल्दो देयर इज अ टेम्पटेशन बिकॉज यू वांट टू प्रूव समथिंग। The problem with us is that right from the very beginning we want to prove something, and therefore we are doing this. If we think that we are just there to present the evidence, whether this side or that side, और लास्ट में कुछ भी नहीं निकला तो भी रिसर्च है, because this is the evidence which I got. So my job is not to prove something or to disprove something. My job is to collect the evidence, whatever comes.
तो मुझे उस एविडेंस को ट्रूथफुली लेना है और उसको अपनी क्वेश्चनायर में कोट कर लेना है, अपनी अकल का इस्तेमाल उसमें नहीं करना है। ठीक है, ये तो सैंपल साइज इसकी बातें तो आपसे हो गई। जब हमने क्वेश्चनायर की सारी चीज़ें ले ली, अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो शायद इसमें मैं बताना भूल गया उस पर आपको, ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है, सॉरी, खैर उसको बाद में बता देंगे। तो जो आपने सारे क्वेश्चनायर के रिस्पॉन्सेज लिए, उन रिस्पॉन्सेज को आपको ले लेना है, उसके सामने कोट कर लेना है और उसमें किसी भी तरह से आपको ये रिस्पॉन्स अपने चेहरे से, अपनी बात से नहीं देना है कि आपका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इट कुड नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू एज अ पर्सन, बट फाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जब क्वेश्चनायर, अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जब आप जाते हैं तो अक्सर ये देखा गया है, बहुत से प्राइवेट एजेंसीज ने किया है, जिसकी वजह से बड़ा सर्वे मुश्किल हो रहा है हिंदुस्तान के गांव में जाके करना, कि आदमी अपने काम को निकालने के लिए कभी कोई झूठ बोल देता है। तो आपको लगता है ये लोग जल्दी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप कहती साहब हम गांव में आए हैं सर्वे करने, कुछ दिन बाद आपके गांव में बड़ा फंड ऑन गवर्नमेंट रिलीज करेगी और सड़क बन जाएगी और गाँव में ये हो जाएगा। झूठ झाट बोल के आपने अपना इंटरव्यू तो ले लिया, उसके बाद अगला जो शख्स इंटरव्यू लेने गया, गाँव वालों ने उसको पकड़ लिया कि अच्छा पिछली बार भी एक साहब आए थे, उन्होंने ऐसा से कहा था, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। तो रिसर्च के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एथिक्स पे आपकी एक रिसर्च, एक लेक्चर भी होगा या होने वाला है, कि एथिकली आपको कोई झूठ नहीं बोलना है। आपको बताना हम तो स्टूडेंट हैं, अगर गांव वाले कहीं भी कि साहब कोई विकास होगा हमारे गांव में, उनका साहब हो सकता है सरकार कुछ कर ले, हमारा काम है, हम स्टडी करने आए, हम स्टूडेंट हैं, हम इस रिपोर्ट को लिखेंगे, इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाएंगे, किताबें लिखी जाएंगी, अखबारों में आएगा, हो सकता है सरकार इस चीज़ को देखे, इसको संज्ञान में ले और कुछ काम कर दे, लेकिन हम आपसे कोई वादा नहीं कर रहे, हम तो स्टूडेंट हैं। तो हमें किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है और अपने किसी भी एफिलिएशन को, अगर आप जाके पहले ही वहाँ शुरू हो गया कि साहब फना लीडर तो बहुत अच्छा है और मेरी समझ से अगली सरकार तो इसी की बननी चाहिए, तो सबको पता लगे आप किसी पार्टी से आए। अच्छा, गांव वाले हमेशा शक भी करेंगे आप किसी पार्टी के एजेंट हैं, क्योंकि पार्टी के बहुत से उनके पास आ चुके हैं पूछने। तो आपको अपने क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश करना है। स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी उसकी बड़ी हिंदुस्तान में है कि भाई बच्चा है, पढ़ रहा है, पढ़ने लिखने वाले लोगों का हमारा कोई वो नहीं है, चाहे आपकी कोई लाइकिंग होगी ना एज ए पर्सन, लेकिन आपको अपनी रिसर्च में कभी भी उसको बताना नहीं है, क्योंकि आपको एज ए न्यूट्रल पर्सन अपने को साबित करना, चाहे हम नहीं है, बिकॉज अनलेस आई एम न्यूट्रल आई नॉट बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन विच आई एम ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दोज पीपल. So therefore it is very important that when I am doing my research, I go to the village or wherever I go, I have to be truthful, I have not to mislead people and openly ask the questions and get my responses and come back from there without trying to show that I have any kind of political or any kind of affiliation to people, which are there in that particular place. अच्छा, इसमें जो हम अपना इस सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जिसकी बात अभी हो रही थी और मैं बीच में उसको भूल गया उसके बारे में बताना, कि एक चीज़ होती है कि जो हम रिसर्च में करते हैं कि हम यूजुअली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग करके अपने यूनिवर्स को के अंदर जो यूनिट है उसको सेलेक्ट करते हैं कि these are the people which we want to actually interview. So we basically go for this probability sampling, whereby we are trying to select our rather unit of research. The first is the simple random sampling, which is very simple, straightforward random sampling, whereby we have some kind of a principle on the basis of which we rather select our sample. But a more sophisticated and a better sampling system is a systematic random sampling, whereby we follow a certain system on the basis of which we are selecting our respondents. Now what we do is that, for example, we are basically involved with election studies, and the basic information about elections is gathered from the electoral rolls. तो हम जो बेसिकली रिसर्च करते हैं इलेक्शन स्टडीज़ की, और हम उसमें सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स हमारे पास हैं. लेकिन
सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स को अगर आप यूज कर रहे हैं और यूपी जैसे स्टेट की या किसी भी स्टेट में आप सैंपलिंग कर रहे हैं या पूरे हिंदुस्तान की कर रहे हैं, तो सिर्फ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग करके आप अपने यूनिट को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको हर लेवल पर यह देखना है कि आपकी सैंपलिंग जो है वो एक साइंटिफिक हो। मतलब यह कि आपको पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है। हिंदुस्तान में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की फॉर एग्जांपल। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर फिर आप और उनके अंदर क्या नाम है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसके अंदर पोलिंग स्टेशंस हैं। फिर उन पोलिंग स्टेशंस में से भी कुछ पोलिंग स्टेशंस को सेलेक्ट करना है। फिर उन पोलिंग स्टेशंस में से आपको रेस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करना है, लोग जो आपको होंगे। तो आपको मल्टीपल स्टेजेस पे, इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, वो करनी है अपने उस इंसान तक पहुंचने के लिए जिसका आपको इंटरव्यू लेना है। क्योंकि इवेंचुअली इंटरव्यू तो आपको इंडिविजुअल का लेना है, लेकिन आप रिसर्च कर रहे हैं पूरे मुल्क में या पूरे स्टेट में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में आपसे कहा था, वी डू नेशनल इलेक्शन स्टडी इन विच वी इंटरव्यू अराउंड से 35,000 people in the whole country. Because we are a big team and we have got so many resources, so we do it, but any individual of course cannot do that because it costs a lot of money and so many people are involved. But anyway, so what we basically do is that in the first stage, for example, we have decided that we will go to say 50 parliamentary constituencies in India. तो पहली स्टेज में हम क्या करेंगे कि सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हम 50 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट करेंगे, और वो भी एक सिस्टमैटिक रैंडम से करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 50 को ही उठा ली। हम क्या करेंगे, 1 से 50 नंबर तक की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने, समझ लीजिए सारी लिस्टेड है, हमने 25वें नंबर की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट कर ली कि साहब ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कोल अलीगढ़ की है, ये हमने सेलेक्ट कर ली, ऐसी आंख बंद करके उंगली रख दी। उसके बाद हमने उसमें 50 ऐड किया और 50वें नंबर पे जो आई वो वाली ले ली। उसके बाद 50 ऐड किया। इस तरह से हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट हो गई। ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सेलेक्ट हुई, हमने नहीं सेलेक्ट किया, इस मेथड ने सेलेक्ट किया। वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनीथिंग, इट्स नॉट दैट वी जस्ट पिक देम अप, दे पिक देमसेल्व्स, दे सेलेक्टेड देमसेल्व्स। जब हमने ये सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट कर ली, तो अब हमको हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अलीगढ़ की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को खोला और अलीगढ़ में हमने ये डिसाइड कर रखा पहले अपनी रिसर्च डिज़ाइन में कि अलीगढ़ की हम 15 पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे। तो फिर हमने अलीगढ़ के सारे पोलिंग स्टेशंस लिस्ट किए। फॉर एग्जाम्पल 300 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो 1 से 15 तक पे हमने कोई छठे नंबर का कोई पोलिंग स्टेशन एक ले लिया साहब, सीनियर सेकेंडरी स्कूल AMU, और उसके बाद उसमें 15 ऐड किया और फिर 15 ऐड किया, और फिर उसमें मतलब ये सारे जो सेलेक्ट हो रहे हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पोलिंग स्टेशंस, ये अपने को खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, इस मेथोडोलॉजी ने सेलेक्ट किया। अगेन, all those market surveys do not take care to do all these things because it becomes very complicated. They'll have to go everywhere, contact people who come in their list, which will be very time consuming, very expensive, so they would not bother about that. Then in a parliamentary constituency, we go to a polling station, and then in one polling station, for example, the senior secondary school in AMU, we will take the list of respondents. Say there are, in that polling station, there are 800 people. And we have decided that we will interview 20. तो 1 से 20 में किसी एक आदमी को हमने सेलेक्ट पे उंगली रख दी, आंख बंद करके रख दी 18वें नंबर पे, 18 में फिर 20 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर हर आदमी जो 20वें नंबर पे आया उन सारे लोगों पे हमने उसको PDF निकाल लिया उसका, पोलिंग स्टेशन वो सब वेबसाइट पे अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन की, और हमारे पास अब वो लिस्ट आ गई 20 लोगों की जो इस पोलिंग स्टेशन में इंटरव्यू करेंगे। हमने इन बच्चों को सबको ट्रेन कर दिया है कि कैसे इंटरव्यू लेना है। फिर हमने इनको भेजा मिस्टर ए को कि आप जाएंगे, आप इस पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, आपको इन 20 लोगों का इंटरव्यू लेना है, इन्हीं का लेना है, कोई सब्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं, एग्जैक्टली इन्हीं का लेना। और अगर उसमें से कोई ना मिले, किसी की डेथ हो गई है, कोई यहाँ से रिलोकेट कर गया है, अलीगढ़ शहर में नहीं है इत्तेफाक से, तो हो सकता है अभी इसमें से 5 लोग नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, बाकी 15 का उन्हीं का इंटरव्यू लेना है, चाहे वो आदमी ना मिले दोबारा जाएंगे, लेकिन उसको लेना है। ऐसा क्यों है? अब ये मल्टी स्टेज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग जो प्रोसीजर है, इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि इफ यू फॉलो दिस प्रोसीजर, इवेंचुअली if you analyze those people, you will find that they will be exactly representative of the population of this constituency and this state and this country.
जब आप इस तरह से करेंगे और आप उन सारे लोगों के नाम निकालेंगे तो आपको तज्जुब होगा देख के कि जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में आप रिलीजियस वाइज देखेंगे तो हिंदुस्तान में 83% ऑफ द पीपल वुड क्लेम दैट दे आर हिंदूज। तो ये जो आपकी लिस्ट बनी होगी इसमें ऑटोमेटिकली 83% लोग हिंदूज ही होंगे। 14% मुसलमान है तो 14% ऑलमोस्ट मुसलमान ही होंगे, एंड सो ऑन। उसी तरह जो कास्ट का क्लासिफिकेशन है, जितने लोग जिस कास्ट के हैं जो उनकी परसेंटेज है वो इसमें ऑटोमेटिकली होगी। जितने अर्बन जितने रूरल हैं ऑटोमेटिकली इतने उतने ही होंगे। मतलब जो भी क्लासिफिकेशन आप इंडियन सोसाइटी का सोच सकते हैं वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसमें रिप्रेजेंटेड होगा। आपको अपने से नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हम अपने से ले लेंगे, इतने लोग इस कम्युनिटी के इतने और ले लो, पता लगा सब इसी मोहल्ले में रहते हैं। जो वो लोग करते हैं इसीलिए उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग इट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, दे आर टेकिंग ओनली इफ दे आर टेकिंग दैट नंबर, इतने नंबर उस लोगों के हो गए, इतने नंबर गांव के हो गए। लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इसको कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग ये कि वो एक ही जगह के हो गए। स्टूडेंट्स में 500 से बात करनी है, 200 एमयू के और 300 शहर के कॉलेज के हो गए 500। आपने यूपी के 500 स्टूडेंट से बात कर ली। अरे भैया यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, आपने अलीगढ़ में रहते थे, अलीगढ़ के सारे स्टूडेंट से बात कर ली, नंबर उतना है, कुछ और भी बढ़ा दिया, 200 से और बात कर ली तो सब यहीं के बच्चे हो गए ना। तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ, उसमें क्लस्टरिंग हो गई। तो सैंपल जो है उसके अंदर डिस्पर्सल होना चाहिए। मतलब अगर उसको आप किसी मैप पे दिखाएं तो अपने आप पता लगे कि सब चीज़ें पूरे मुल्क में बिखरी हुई हैं। आपका सैंपल पूरे मुल्क में बिखरा हुआ है। दैट मीन्स इट इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, and if you follow this procedure it will be definitely representative of the whole country, because you will be very carefully looking at all those places and seeing that all those constituencies, all those polling stations and all those respondents are equally spread across the country. That is the beauty of this system. तो जब आप इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग करके अपना सैंपल निकालेंगे और उसमें सही लोगों को आप चुन लेंगे, उन्हीं लोगों के आपके इंटरव्यू होंगे, उनके ही डेटा को आप ला के उस डेटा की कोडिंग होगी और फिर उसके बाद उसको SPSS में आप चला के रिजल्ट निकालेंगे, तो वो जो रिजल्ट आपका होगा वो ऑलमोस्ट परफेक्ट होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहा कि फला पार्टी को 40% वोट मिलेंगे, उसको 45% मिल गए, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो 1-2%, 1%, 1.5% तक प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर एरर आ रही है इसका मतलब कि आपका प्रोसीजर सही नहीं था। इत्तेफाक से कभी सही भी हो गया, लेकिन क्योंकि आपने टेक्निक को फॉलो नहीं किया इसलिए हमेशा आपका रिजल्ट सही नहीं रहेगा। रिजल्ट आपका तभी सही होगा जब आपने प्रोसीजर को फॉलो किया होगा। अच्छा, दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉलो करने से क्या फायदा है? एक तो आप सही रिजल्ट पाएंगे, वन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर रिसर्च विल हैव नो वैल्यू if you are not following the procedure. For example, if anybody is doing any academic work anywhere in the world and he or she quotes any data of any of these surveys, it is not an academic research. It will not be published in any international journal because these surveys have no meaning. They are market surveys, जैसे कि मार्केट में साबुन वाला सर्फ एक्सेल अच्छा कि निरमा अच्छा, वो तो कंपनी करवा रही है तो उसका ही साबुन के ज़्यादा लोग फेवर करेंगे, वो तो है ही। तो when a political party is funding a survey, it's bound to tell you that this party is going to win the elections. मतलब उसमें there is no point in guessing, you know. So they have no meaning. So the survey has to be academic, and it has to explain the procedure. अगर आप सही सर्वे कर रहे हैं उसके प्रोसीजर, इसीलिए किसी भी अच्छी रिसर्च, आप PhD भी कर रहे हैं तो in the end of your research you have to explain how you did this survey. If you are not explaining it, that means your survey is not valid, you know, because you have not explained it. So the whole procedure has to be explained in the end to confirm that your survey was in conformity with the internationally recognized norms of survey research. तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम जब सर्वे अगर रिसर्च करें तो उसको इस नॉर्म के हिसाब से करें, नहीं तो ना करें, कोई और मेथड फॉलो करें। लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा ज़रा कॉम्प्लेक्स in the sense that it needs a lot of running around, going to people. Maybe you need a team of people who would be doing that. But if you are doing it in a small universe, it is doable, you know. A group of 5, 10, 20 students can do it in a city. You do it in a city or a town. Don't do it in the whole state, but do it in a proper manner, so that when you are presenting your research or trying to get it published, it carries some academic worth. Otherwise, it will not be recognized. तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप अपनी सैम्पल साइज को डिसाइड करेंगे, कैसे आप सैम्पलिंग करेंगे, कैसे आप क्वेश्चनर बनाएंगे, कैसे आप क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करेंगे और फिर आपके पास डेटा आएगा।
तो एक पूरा एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि सैम्पल सर्वे रिसर्च बहुत आसान है, क्वेश्चनर लिया, लोगों तक गए, उनसे आंसर लिया और लाके उसको एनालाइज करके और आंसर निकाल दिया, जो यूजुअली होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इफ़ वी आर इनटू एकेडमिक्स एंड वी आर डूइंग दिस रिसर्च, इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर systematic manner, following all the procedures and protocols of survey research. Many of them are written in the books, but I tried to talk to you about things which usually, would not be written in books, but they would be rather issues which come before you when you are rather dealing with this research. नॉन प्रोबेबिलिटी तो मतलब एक्चुअली इस सर्वे रिसर्च में बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन वो जो एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है कि साहब कभी कभी आपके पास आप उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते, तो आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग का तरीका वो है जिसमें कि आप उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन तक आप कन्वीनियंटली पहुंच सकते हैं, बिकॉज इट इज़ मे बी एन inaccessible area, it is a situation where you are not able to get that number of people of that particular type. तो ऐसी सिचुएशन में आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द इशू और द प्रॉब्लम। सिमिलरली कभी कभी कोई बहुत ही ऑब्सक्योर हिस्टोरिकल टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं जिसमें कि आपको नहीं पता कि वो कौन से लोग हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टॉक टू सम पीपल हु आर देयर इन इंडिया मे बी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, खैर अब तो बहुत देर हो चुकी, लेकिन मे बी हु आर देयर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी से, तो आपको नहीं पता है, तो आप गए किसी एक इंसान, आपको पता लगा अलीगढ़ में एक साहब है, साहब जो उस ज़माने में थे, आपने उनसे इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने बताया कि मेरी समझ से एक साहब और है जो उस ज़माने में थे, उनसे आप मिल सकते हैं, तो आप वहाँ गए, फिर उन्होंने किसी और के बारे में बताया। तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग कभी कभी की जाती है अबाउट दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक, where the respondent herself will tell you that who is going to be the next respondent. But that depends upon, upon the situation. But anyway, that's not so important. तो ये कोटा सैम्पलिंग और ये सारी उससे रिलेटेड हैं। तो बेसिकली मतलब जो सर्वे रिसर्च के अंदर जो 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने एम्फेसाइज की वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप ध्यान में रखें, और that is how you have to administer your survey. I think I'll stop here to take your questions, because if you have some questions here, then that is more important to be discussed. इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। Somebody has anything to ask in this? Yes, sir. Yes, please. आप पूछे। Sir, I have a question. बैठे नहीं। Sir, I have a question related to sampling, sir. जैसे आपने कहा कि sample should be a true representative of the population. तो कई बुक्स में है कि जैसे 1500 या 1500 का सैंपल के साथ आप पूरी कंट्री में स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपने भी कहा कि अगर आप प्रॉपर्ली मल्टी स्टेज सैंपलिंग आप हाँ कर सकते हैं। तो क्या ये इंडिया में पॉसिबल है सर कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल वी आर कंडक्टिंग स्टडी ऑन इलेक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है सर कि 1500 का सैंपल अप्रोप्रिएट होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? बाकी वेस्टर्न बुक्स में तो उन्होंने लिखा ही है। नहीं, वेस्टर्न बुक्स में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया की सोसाइटी एक्चुअली इतनी डाइवर्स है कि हम लोगों ने यहाँ एक्सपीरियंस जो किया है कि यहाँ पर अगर आप बहुत छोटा सैंपल लेंगे तो वो उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, एंड द चैलेंजेस ऑफ डूइंग सर्वे आर नॉट दैट बिग एज यू हैव इन दोज वेस्टर्न कंट्रीज वेयर यू कांट एक्सेस पीपल। मोस्ट ऑफ दोज सर्वेज आर डन बाय पोस्ट, people are not available for you to talk to them, even when you are paying money, still they don't talk to you, or they give you time, it's depending on the watch, they'll give you 3 minutes time. You can't administer a survey in 3 minutes. It actually takes around 20-25 minutes to do a good questionnaire to people. But in India, people are generous with their time. So in India, I think it's better that if you take a larger sample. Of course, any individual will not be able to do a pan-India survey, because how can you do it? But when you do it, it should be relatively larger sample, as compared to them. Matlab, they have compromised on quality because of constraints. They know that they need to do more, but they can't do because they don't get that number of people. So national election study is done in America also. In many countries it is done. National election study is done in India also. But I am associated with an organization, CSDS in Delhi, which we do basically like academic election surveys. So we basically do it all over India. Means whenever general elections are held, after every 5 years, so we target around 30-35,000 people, in the whole country. सर आपकी स्टडी में जैसे यूपी के इलेक्शंस में आपने करी, तो आपका क्या सैंपल का क्या साइज? यूपी के इलेक्शन में हम यूजुअली करते हैं करीब 4-4,500 का साइज लेते हैं यूपी में,
लेकिन अगर आप छोटी स्टडी कर रहे हैं किसी छोटे यूनिवर्स में तो 500 लोग भी एनफ है. इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्स, यू नो. बट if it is too small, you know, it creates problems. Because suppose you are not doing it on the whole population. So when you do it on with less number of people, then that section would not be adequately represented in your unit, and that will not make your result very reliable. तो मेन चीज़ ये देखनी कि जिसकी भी स्टडी आप कर रहे हैं, जैसे आप वुमेन की स्टडी कर रहे हैं या आप किसी भी सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं समाज के, तो उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उस सैंपल में इवेंचुअली आना चाहिए. अगर वो उतना सैंपल में रिप्रेजेंटेशन नहीं है जैसे आपने किया और ज़्यादातर मेल्स हैं उसमें, आपकी प्रॉब्लम है. और बेसिकली प्रॉब्लम है विमेन की. तो विमेन का अगर नंबर बहुत कम है, बात समझ, जैसे कि आपका समझ लीजिए, जैसे मैंने छोटे लेवल पर आपने किया 250 विमेन आई, तो विमेन के अंदर जो इंटरसेक्शनैलिटी है वो रिप्रेजेंटेड नहीं होगी. कहने को तो 250 औरतें हैं, लेकिन औरतों में भी तो इंटरसेक्शनैलिटी है ना. अलग अलग मज़हब हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग ज़माने हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो वो इंटरसेक्शनैलिटी में जब आप उसको और फर्दर स्प्लिट करेंगे तो पता लगा कि फला कैटेगरी में 3 औरतें आई खाली, फला में 6 आई, तो 6 औरतों से बात कर कर आप उस सेक्शन के बारे में कोई बात अथॉरिटी से नहीं कह सकते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर आपको उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. तो यही तो रिसर्च डिज़ाइन का कमाल है कि उसमें हमको ये देखना है कि इवेंचुअली जिस सेक्शन की हम स्टडी करने चाह रहे हैं वो सेक्शन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हो हमारे उस फाइनल सैंपल में. नहीं तो वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा. 5 बच्चे कोई भी हो, बात करके आप 25,000 बच्चों के बारे में कोई कंक्लूजन निकालें तो ज़रा सही नहीं होगा. आप में से कोई कह रहा था और जी. नहीं, क्लस्टर सैम्पलिंग कोई नहीं होती है. सैम्पलिंग में कभी कभी क्लस्टरिंग हो जाती है. क्लस्टरिंग मतलब चीज़ों का एक जगह जमा होना. कि आप कभी कभी देखेंगे कि आपने सैम्पलिंग सही से नहीं की है तो आपके जो सैंपल आया वो एक जगह क्लस्टर्ड हो गया. मतलब ऑल द पीपल आर फ्रॉम हियर. जैसे अगर आपने केयरफुल नहीं रहे, आप फॉर एग्जांपल यूपी की स्टडी करें, जैसे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, तो आपने अगर सही से डिस्ट्रिक्ट्स या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं देखी तो हो सकता है कि आपकी ज़्यादातर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वेस्टर्न यूपी में आ जाए. यूपी इज़ ए ह्यूज स्टेट. देर आर 4 जनरल रीजन्स अंडरस्टूड इन यूपी. पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, सेंट्रल यूपी है, इधर है वेस्टर्न यूपी है. तो अगर सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ज़्यादातर आपकी इधर कंसंट्रेटेड हो गई तो आपको पूरे यूपी की ओपिनियन नहीं मिल पाएगी. तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो सैम्पलिंग है उसमें क्लस्टरिंग ना हो. कभी कभी टेक्निक फॉलो करके भी क्लस्टरिंग हो जाती है. तो यू हैव टू रीडू इट टू इंश्योर दैट द स्प्रेड इज इवन. मतलब मोर और लेस इवन. जैसे नहीं होता कि आप किसी चीज़ को देखें, नक्शा बनाएंगे तो उस पर देखें कि जो चीज़ें स्प्रेड हैं वो ओवरऑल हर जगह है, कहीं एक जगह क्लस्टर तो नहीं हो रही है. इफ द क्लस्टरिंग इज हैपनिंग दैट इज नॉट गुड बिकॉज दैट वुड not make your sample truly representative. So that is what you have to take into account as a researcher when you are making that research design to ensure that that does not happen. तो ये आपका रोल है उसमें. मतलब टेक्निक तो फॉलो करनी है बट विद सम इंटेलिजेंस टू सी दैट इट इज एग्जीक्यूटेड इन द राइट मैनर. So normally in a research title we write that I have a study on a teachers in Aligarh only, in Aligarh district only or in a Gorakhpur district only. Suppose I want to study on teachers population, but the on whole UP. Then how will I choose my sample? If it is whole UP, then the first thing is that as an individual researcher, one should desist from doing that because I will not be able to do that. आप बात समझ रहे हैं? जैसे आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है तो वैसे तो जाने को पैदल भी आदमी जा सकता है, लेकिन आप उसको रूल आउट करेंगे कि 3 मोड्स हैं. आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, जहाज़ से जा सकते हैं. बस बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो ट्रेन और जहाज़ बचा, फिर आप अपने उसके हिसाब से सोचेंगे. तो पॉइंट ये है कि मतलब समथिंग विच इज़ डूएबल फॉर एन इंडिविजुअल PhD स्टूडेंट टू डू अ पैन UP सर्वे अगेन इज नॉट डूएबल. आर यू गेटिंग माय? We are thinking at the right beginning of the deciding of the topic. ऑफ कोर्स यस. यही तो मैं कह रहा हूँ कि एंथुजियाज्म में हम कभी कभी पूरे इंडिया का ले लिया या पूरे यूपी का ले लिया. हम कैसे एक इंडिविजुअल कर पाएगा? उसके पास ना टाइम है, ना एनर्जी है, ना रिसोर्सेज है, तो कर ही नहीं पाएगा. तो वो उसको माइक्रो लेवल पे करना है. वैसे भी जस्ट अ मिनट, व्हेन वी आर डूइंग रिसर्चेज इन सोशल साइंसेज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट. और आप में से जिसका भी टॉपिक फर्म अप नहीं हुआ है वो अपने सुपरवाइजर से इस चीज़ को डिस्कस कर सकता है या कर सकती हैं आप कि नेवर टेक अ माइक्रो टॉपिक. Macro research is no research for an individual. You take a micro topic, only then you will be able to go inside it.
मैक्रो चीज़ें तो किताब में लिखी हुई हैं ब्रॉड, हिंदुस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, इसमें इतनी नदियाँ हैं, इतने पहाड़ हैं, आप क्या कर देंगे इसमें? आपको आना है माइक्रो लेवल पर. व्हेन यू गो एट अ माइक्रो लेवल, लाइक यू पुट लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, ऐसे पत्ती लग रही है, आप रखेंगे तो उसमें बड़े कीटाणु और सारी चीज़ें नजर आने ना. व्हेन यू गो एट अ माइक्रो लेवल, so that is what the research is. You have to look at something microscopically, and that you can only do when the universe is smaller. When you go at a bigger universe, things are blurred. So research, the purpose of research is to see things clearly. They are already there in the society. What your research has done has put focus on that issue of maybe caste or whatever, and you have been able to identify the intricacies of that issue, the nuances of that issue more closely, and that is what your research is. Basically यही किया आपने, तो उसको माइक्रो लेवल पे लाएंगे ज़्यादा से. जी सर प्लीज़. What is difference between stratified and quota sampling? कोटा सैम्पलिंग में जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसकी डिटेल नहीं बता पाया आपको. कोटा में जैसे होता है कि आप किसी एक सेक्शन का एक कोटा आपने डिसाइड कर लिया कि साहब इतने लोग उसमें होने चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इतने लोग नहीं हुए तो मतलब वो सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा. और वो तब होता है जब आपको डर होता है कि उस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन या उस टाइप के लोगों के नंबर्स बहुत कम होंगे, तो आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस वेरिएशन के इतने इतने लोग हमारे सैंपल में होने चाहिए, टू मेक इट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, टू एंश्योर दैट सम सेक्शन which you want to focus upon is not ignored. तो you fix a quota, that at least minimum इतने numbers इनके होने चाहिए. ये stratified में तो आप एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और आपको ये खतरा नहीं है. जैसे मैंने बताया मैं इलेक्शन स्टडी करता हूँ, तो मुझे ये खतरा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन इससे मतलब छूट जाएगा, क्योंकि सबकी इवनली स्प्रेड है पॉपुलेशन में, सारे सेक्शन जो हैं वो मतलब दे वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस मेथड. सो आई डोंट नीड टू गो फॉर दैट method. I go for stratified or multi-stage stratified random sampling and then get my sample and then administer the questionnaire and do whatever eventually I have to do. Sir, जी बेटा. sir, as per your experience, I feel like you are the finest person to ask the question. Sir, let's say if the research is on vulnerable section or a marginalized community of the society. So, sir, the first question which arises from the respondent side, that why would they respond to us? Like, as you mentioned that if you will say student or as a researcher, we can ask a question or something like that. But sir, again the question this arises that why would I respond to you? So sir, I just want to ask what could be the mechanism in dealing or reapproaching the section, let's say drugs addicts or any some section like that, so that we can get a good response or something like that. So let's just. That is very important, and that's what I was talking about when I talked in general about interview. More so about vulnerable sections, as I mentioned about caste issues, or about gender. That when somebody is being questioned, in relation to these sensitive issues, even of politics, and in front of male members of the family, the female would not be able to explain, those things. So you have to be very careful. You have to approach that respondent very carefully, in a very sensitive matter. Because, and especially when it comes to cases like drug addicts, the very fact that the person identifies as a drug addict, because in our society it is a stigma, it's you are accusing me if you say that when you take drugs, so I'll say that I don't take drugs, maybe you take them. मतलब मैं क्यों मानूंगा कि मैं, तो मतलब एक बड़ा मुश्किल काम है. तो मतलब वही बात है कि जो इंटरव्यूअर है उसको एक मेंटल रैपो इस्टेब्लिश करना है उस रेस्पोंडेंट से. इसीलिए आप देखें कि यूजुअली क्या होता है हमारे मुल्क में, जो रिसर्चेज इस तरह की होती हैं, सोशल रिसर्चेज, ज़्यादातर वो अच्छी रिसर्चेज बाहर के रिसर्चर्स ने कर रखी है जो हमारी सोशल रियलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते. इट्स सो स्ट्रेंज दैट समबडी, मतलब इन माई फील्ड आई टेल यू दैट समबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मे बी इंग्लैंड इज कमिंग एंड डूइंग गुड रिसर्च ऑन electoral politics in UP. It's a shame on us that we are born here, we are living here, we know everything about this society, and that person is able to bring about those nuances which I am not able to do. Because why? Because they spend that much of time in the field which we didn't do. तो मतलब वो जो फील्ड में टाइम स्पेंड करने की बात होती है ना, हम फील्ड से डिजिस्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम कमरे में बैठ कर रिसर्च कर ले. वो सर्वे रिसर्च में खासतौर से किसी भी फील्ड या एथनोग्राफिक रिसर्च या जो भी रिसर्च जिसमें आप यू हैव टू गो इन द फील्ड एंड टॉक टू, मतलब वो रैपो इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बड़ा मुश्किल है ना. हम तो गए, बस हम चाह रहे हैं आज ही हम गाड़ी से उतरे और उनका इंटरव्यू लें और अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ जाए. और एक इंसान जो है वहाँ 6 महीने से उनके साथ रह रहा है या रह रही है, और उसने जो उनके साथ इस्टेब्लिश किया रैपो, तो फिर वो चीज़ जो निकल के आएगी वो आपकी और मेरी उस रिसर्च में नहीं निकल गई. तो वो
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू कम टू दैट लेवल मेंटली, बिकॉज अनलेस यू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम आउट. मैं एक और रिसर्च का एग्जाम्पल देता हूँ. बहुत पुरानी रिसर्च है, अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी. एल्टन मेयो एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, उन्होंने रिसर्च करी थी हॉथॉर्न स्टडीज़ में. तो क्या किया था उन्होंने, देखिए, मतलब ही वेंट टू द प्लांट एंड ही फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड दैट हु कैन बी द पर्सन हु कैन टेल अस अबाउट दीज वर्कर्स, बिकॉज दे विल नेवर टेल. आई एम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और मुझे जो कर्नल साहब हैं रिटायर्ड, उन्होंने मुझे हायर किया है. एक तो उनका डर प्लस उनका मैं दोस्त हूँ, अब आप मुझे कैसे बताएंगे. तो उन्होंने पूरा स्टडी किया. देखते देखते उनको समझ में आया कि साहब यहाँ पर एक डिस्पेंसरी है, उसमें एक बूढ़ी नर्स है, और ये सारे वर्कर्स जो हैं इसमें इनको चोट लग जाती है रोज़, क्योंकि ऐसी फैक्ट्री थी कि पैर में चोट लग जाती थी सारे वर्कर्स को. सब वहाँ जाते थे पट्टी उट्टी कराने, बहुत मुश्किल काम था, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड था. तो थोड़ी देर उस लेडी के पास जाते थे, थोड़ा अनमाइंड करते थे. होता ना, कोई इंसान को चाहिए जिससे कोई इंसान कहे. तो बेचारी शरीफ औरत थी, अच्छे से सफाई वफाई करती थी, ज़ख्म की लगा रही है, तो आदमी बैठा हुआ है, तो फिर उन अपने दिल की बात उनसे कह रहा है कि अरे ऐसा है और यहाँ पे देखिए ऐसा है वैसा है जो भी. तब उनको पता लगा, देन ही टॉक टू दैट नर्स एंड देन ही कुड नो व्हाट आर द एंग्जाइटीज एंड इश्यूज ऑफ दोज पीपल. वो तो मतलब वो नहीं कि उसने वहाँ टाइम गुजारा, उसने देखा, उसको पता लगा कहाँ से इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी. तो ये चीज़ जो है ना, और फिर उसको क्या समझ में आया कि द मेन चीज़ ये क्या है कि ये लोग अपनी बात कही नहीं पा रहे हैं. तो इनके अंदर एक पेंट अप यो ह्यूमन सेंटिमेंट की बात उसने कही ना, ह्यूमन सेंटिमेंट. जैसे वो बहुत रेलिवेंट है इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, कि वो ह्यूमन सेंटिमेंट हमारा कभी निकल नहीं पाया. आप एक प्रिविलेज्ड कास्ट हैं, आपका रोज सेंटिमेंट बाहर निकल रहा है, क्योंकि आप एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में, और आप अज्यूम कर रहे हैं हम भी वैसे ही इंसान हैं, लेकिन हम वैसी सिचुएशन नहीं. तो उन्होंने क्या किया, उसने उन सारे लोगों के इंटरव्यू लिए और सिर्फ अटेंटिवली मैनेजमेंट ने उनकी बातें सुनी और नोट करी, किया कुछ भी नहीं, प्रोडक्शन ऊपर चला गया. बिकॉज वॉट दोज पीपल वॉन्टेड ओनली अ सिंपैथेटिक हियरिंग, somebody who is so sympathetic to my cause, because I never met anyone in my life who was sympathetic to me. मतलब तो हमारे आप जैसे आदमी के लिए, कोई शहर में रहने वाले में भी एक प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास के लोगों के लिए, हमारे लिए शायद वो कोई इशू नहीं है, बट उस इंसान के लिए है. तो टू रीच टू दैट लेवल, mental level of people, and then to be able to empathize with them and then try to understand what they feel, it is a difficult task, but only then we can get the reality, which is there hidden somewhere. So again, it's a very difficult task and it's very challenging, and the quality of that field work, will determine the quality of your result. So again, it becomes very qualitative, although it is a quantitative research, it becomes very qualitative, because the administration of that procedure is very qualitative. So it will vary from person to person. So that is there. ठीक है सर एक क्वेश्चन था. हाँ बेटा ठीक है, पूछना. सर सोशल मीडिया से रिलेटेड था कि एक्चुअली आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. हम लोग डील करते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट या ट्वीट्स वगैरह है उस पर स्टडी करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं विवो वगैरह, तो उस पर एक सैंपल ऑफ डेटा की कैप्चर से हमने वो कर लिया और ऑटो कोडेड थीमिंग के थ्रू वो सब हो गया. बट हम अगर सोशल मीडिया में सैम्पलिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एवरी ट्वीट इज डिफरेंट. तो यू नीड टू लुक एट एवरी ट्वीट एज पॉसिबल. अगर आप उसकी सैम्पलिंग करके तो उसकी क्वालिटी डाइल्यूट हो जाए कि एक ट्वीट इनका है, मेरा है, इनका है. हाउ यू डिसाइड दैट माय ट्वीट इज बेटर देन हिज और दैट. सो यू नीड टू लुक एट व्हाटएवर नंबर यू कैन. मतलब दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि उसमें तो आपको सैम्पलिंग का इंसान नहीं है ना कि सबकी चॉइस. बस वो जैसे हजारों में ट्वीट हैं या लाखों में ट्वीट हैं, तो उनको आप ऑटो वो कर सकते हो, ऑटोमेटिक यूज सकते हैं उसी के ऑटोमेशन के थ्रू. बट क्वालिटी भी अगर देखना चाह रहे हो तो क्वालिटी में आप यही कहते हैं कि आप कीवर्ड्स डालेंगे, उसको देखेंगे कितना लोगों ने किया. तो दूसरे वक्त में रखते हैं. So it's time to conclude. You have question में नहीं लीजिए. वो बेसिकली इसी है कि इसका कोई देखिए राइट नंबर आमतौर पर कहा जाता है कि 10 से 20% हो
यूनिवर्स का साइज 10, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा यूनिवर्स है जैसे पूरा मुल्क है तो उसमें 10-20% तो मतलब इट विल रन इनटू करोड्स इन इंडिया, यू कांट डू दैट। तो अगर बड़ा यूनिवर्स होता है तो आप उसको फिर सैंपल साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, छोटा होता है तो उसको एक्सपेंड कर देते हैं। मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जो समाज के जो इंटरसेक्शनैलिटीज है, जो नुआंसेस हैं, वो सब रिप्रेजेंटेड हों उस सैंपल में। So it should neither be too big nor too small. If it is too small, it will be able to paper over those small distinctions which you find in this Aligarh city or wherever the universe is. If it is too big, it will be unmanageable. So it should be reasonable. It depends on maybe many a time it's your experience with research which tells you that what are the appropriate numbers. There are no universally designated appropriate numbers which you can fix in a sample size. Thank you so much, sir, for the wonderful discussion. Friends, really it was one of the untouched discussion about the non-experimental research design. So survey type of research is a non-experimental research design, but the results can be at par with the experimental design when you are ready to take care of n number of conditions. Sir discussed about the sampling. Sampling is not possible when you are going to the survey. Survey itself is going to the non-probability sampling technique. But you can ensure the probability sampling, all the conditions of the experimental design to make research study at par with the experimental design. So it has really been a wonderful discussion, sir. Our gratitude, sir. आपने वक्त दिया, sir. Thank you so much. And friends, great applause to you. Thank you so much, sir.